Hi guys, welcome to Bollywood Bubble. With me is a very sweet looking actress. In fact, her smiles is one of the things I think the first thing that any guy would notice. I'm talking about the very talented Shraddha Das, whose latest release is Great Grand Masti. Shraddha, thank you so much for talking to Bollywood Bubble. Great Grand Masti is out. How does it feel? It's just been less than half a day, yeah, so I can't tell you, but it's an overwhelming feeling because मस्ती जो फर्स्ट मस्ती है वो मैंने स्कूल में देखी थी 8th स्टैंडर्ड में आई थिंक और मैंने ये एक्टर्स को डायरेक्टली सामने देखा है इस फिल्म में तो मेरे लिए इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग कि मैं इस कास्ट का एक हिस्सा हूँ एंड बहुत अजीब सी फीलिंग है जब मैंने कल स्क्रीनिंग में अपना नाम देखा वहाँ पे अच्छा लगा बहुत So you said you watched the film when you were in school. So when you got मस्ती नॉट Masti. ग्रैंड मस्ती इतनी भी छोटी नहीं हूँ No, I meant Masti only, but yeah. So you're playing one of their wives. Right, So Aftab I will ask you the first day of the shoot with Aftab, or with the whole cast. How was it? Because they're all veterans, at least in the Masti genre. वेल फर्स्ट डे मेरी बहुत फट गई थी एक्चुअली क्योंकि लाइक आई सेड कि मैं इनको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती हूँ मैं उनको सिर्फ स्कूल में मैंने उनको इस मूवी में देखा था फिर ग्रैंड मस्ती स्क्रीन पे देखा था तो फर्स्ट डे ही मुझे उन सबके सामने बिठा दिया गया एक डिनर टेबल सीक्वेंस है जो आप फिल्म में देखेंगे तो मैं उनके सामने तीनों के सामने और मुझे बहुत ही सिंपल सा डायलॉग बोलना था और मैंने कुछ 30 फिल्में की है 5 लैंग्वेजेस में लेकिन मेरी इतनी फट गई मुझे सिर्फ इतना बोलना था चलो लेट्स गो समथिंग समथिंग ऐसा कुछ बोलना था ना और यस एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी मतलब मेरी ऐसे हार्ट दुख 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 हो रहा था एंड आई थिंक ओनली विवेक नोटिस्ड इट दैट समथिंग इज रॉन्ग विद मी बिकॉज आई वाज शिवरिंग लिटरली एंड मुझे इंदर सर डांटे जा रहे थे मुझे सबसे ज़्यादा वो डांटते थे हाँ क्योंकि ही एक्सपेक्टेड कि इतनी फिल्में करने के बाद मैं इतना डरूंगी नहीं लेकिन मैं डर गई थी सो देन विवेक टुक मी इन द साइड एंड ही सेड कि थोड़ा सा काम डाउन यू कैन नॉट परफॉर्म इफ यू गोइंग टू बी सो नर्वस एंड देन वी डिड इट फाइनली इट केम आउट वेल ऑन स्क्रीन लाइक कल जब मैं इंदू जी को मिली भी मैंने उनको कहा कि थैंक यू आपने मुझे इतना डांटा एटलीस्ट थोड़ी ढंग की लग रही हो Okay. So tell me something. ये जो आपने फिल्म की है ग्रेट ग्रैंड मस्ती, was there any apprehension because it's an adult comedy plus आपने बाकी लैंग्वेज में काफ़ी फिल्में की हैं but Bollywood whatever films have come at an interval. तो how was that thing? वेल ग्रेट ग्रैंड मस्ती से सेक्स कॉमेडी लेकिन मेरा कुछ भी ऐसा रोल नहीं है उसमें जो रॉन्ची हो या मैं ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ फिल्म में विच सो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मेरा बहुत ही सेफ और बैलेंस्ड कैरेक्टर है क्योंकि ना ही मैं कोई साड़ी या सलवार कमीज़ में पूजा पाठ कर रही हूँ ना ही मैं एकदम कोई रॉन्ची कैरेक्टर कर रही हूँ एक बहुत ही बैलेंस्ड जीन्स और टॉप में एकदम शीक लुक है मेरा तो दैट वे आई फील द सेफेस्ट इन दिस फिल्म Wow, that's interesting. Okay, so let's say the first day जब आपको you would have heard the narration and you would have come back home and you would have told someone कि अच्छा you know what I've decided I'm going to do Great Grand Masti which is a sequel to Grand Masti. तो वो first reaction किसका था और क्या था? What was it? मैंने किसी को नहीं बताया बाय द वे अंटिल आई वेंट टू शूट बिकॉज मैं मिली थी इंदर जी को 3 महीने पहले जब वो ऑलरेडी कास्टिंग कर चुके थे फिल्म की कोई और सिलेक्ट हो गई थी मुझे पता नहीं कौन फिर उसके बाद मैं सनम तेरी कसम मूवी में एक कैमियो कर रही थी तो तब मुझे एक कॉल आया सडनली जब इनकी शूटिंग शुरू हो गई थी कि आप मैरियट पे आइए और यहाँ पे शूट हो रही है और इंदर जी ने बुलाया तो मैं गई और उन्होंने मुझे वहाँ पे सिर्फ एक मुझे वो लोग हमें स्क्रिप्ट नहीं बता रहे थे बिल्कुल भी कोई स्टोरी बताने को रेडी नहीं था इतना कॉन्फिडेंशियल था तो उन्होंने बोला ये सीन है आपको यहीं परफॉर्म करना है अभी मैरियट में जहाँ शूटिंग चल रही थी तो मैंने वो सीन पढ़ा और 1 या 2 टेक में वो हो गया उनको बेसिकली कोई एक्ट्रेसेस ऐसी चाहिए थी जो फटाफट टेक्स दे बिकॉज द कॉम्बिनेशन सीन्स आर अ लॉट एंड दे वांटेड समबडी जो फटाफट काम करे तो एनीवे तो उसी दिन मैं सिलेक्ट हो गई लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि इतनी रिप्लेसमेंट्स हो रहे थे कि मुझे लगा कि बता दूंगी तो इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ सुपरस्टिशन सो आई डिडंट टेल एनीबडी आई टोल्ड एवरीबडी ओनली आफ्टर गोइंग ऑन द सेट एंड माई फादर वॉज मोस्ट एक्साइटेड बिकॉज मेरे डैड है एक विलेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल वहाँ से तो वो जाते थे 6-7 घंटे ट्रैवल करके सिर्फ शूटिंग देखने एक्टर्स की पेड़ पे चढ़ के फिल्म देखते थे तो फॉर हिम इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड ही वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन व्हेन ही हर्ड अरे बाप रे तुम ग्रेट ग्रैंड मस्ती कर रही हो सीधा मैंने शूटिंग में बताया उनको सो दैट वाज अ थिंग बट ही वाज नॉट ऐसा कुछ ही नहीं था कि ओ सेक्स कॉमेडी कर रही हो या कुछ ऐसा उनका रिएक्शन नहीं था But if you see Masti and Grand Masti, so it's generally about the boys. So even when you were going in, did you ever think यार बीवियों का तो वैसे भी इसमें रोल बहुत कम होता है क्योंकि सारा काम तो सेडक्ट्रेस का होता है लड़कों का होता है. Did that thought occur to you at any point in time?
नो यू नो फॉर मी आई थिंक देखो मेरी पहली जो फिल्म थी लाहौर थी जिसको क्रिटिकल अक्लेम मिला था ज़्यादा एंड इट वन 4 नेशनल अवार्ड्स एंड देन उसके बाद दिल तो बच्चा है जी की जहाँ अगेन आई गॉट टू परफॉर्म बिटवीन दीज एक्टर्स लाइक अजय देवगन एंड ऑल एंड देन आई डिड जिद but you know I felt that it's important first right now for me to reach a wider range of audience through a popular film so although definitely मेरा ऐसा कोई performance oriented role है नहीं फिल्म में obviously ऐसी फिल्मों में होता नहीं है लेकिन I feel that it's the best way to reach a larger range of audience and media and you know people watch this film people watch a sequel to a big film so for me that was most important honestly so I won't go around telling that oh my god मेरा बहुत serious performance oriented role है फिल्म में ऐसा नहीं है लेकिन yes it's a film that makes you popular and that's why I did it. Nice. Okay, and how was the experience of working with the three Masti boys because they are veterans, they know their stuff in and out, especially with you know all the gags and comedy and everything. So how was that? You know उनकी पता नहीं कुछ अजीब सी एक कोड वर्ड लैंग्वेज होती है जो अपने कोड वर्ड में बात करते हैं जो समझ में नहीं आता कि क्या है मतलब यू नो कभी कभी लगता है वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं या किसका मजाक उड़ा रहे हैं एंड वो लोग आंखों आंखों में ही जोक्स क्रैक करते हैं दूसरों के बारे में या पता नहीं क्या करते हैं सो दे हैव दैट काइंड ऑफ अ टाइमिंग सो मेरे लिए इट वॉज नॉट टू मच ऑफ मस्ती फर्स्ट स्केड्यूल में बिकॉज मेरा कॉन्स्टेंटली मैं सिर्फ ये ध्यान दे रही थी कि मुझे मेरा डायलॉग बोलना है मुझे टाइमिंग देना है करेक्ट क्योंकि अगर गलत टाइमिंग दूंगी तो वो ख़राब लगेगा तो आई वॉज ओनली बॉदर्ड अबाउट मैचिंग अप टू देयर कॉमिक टाइमिंग इन द फर्स्ट स्केड्यूल लेटर ऑन धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा गॉसिप वॉसिप करने लग गए थे ऑफ द शॉट लाइक वो चाहते थे कि हमारे कैट फाइट्स हो क्योंकि उसमें लड़कियां हैं 3 या दे वांटेड इट कि कुछ एंटरटेनमेंट हो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज द 3 गर्ल्स और ऑल ऑफ अस आर बंगाली दिस टाइम बाय द वे द 3 वाइव्स एंड इवन विद उर्वशी एंड वी डिडंट हैव एनी इश्यूज सो वो लोग ऐसा हमें मतलब बोलते थे इसने ये बोला उसने वो बोला जानबूझ के कि हम झगड़ा करें लेकिन So basically, we don't get any gossip because there were no cat fights नो कैट फाइट सीरियसली नो कैट at all. नहीं Acha. And what about any pranks on you? Because they are known to be very pranksters, na? They're big masti khors. prank. No, like I said, there was this one time where they came and they started gossiping about this one actress in the film to us. And then they thought that we will reply and we'll say something. तो हमने भी कुछ बोला रिटर्न में और फिर बीच में मालूम पड़ा कि कुछ तो गड़बड़ है मतलब ये लोग हमें उल्लू बना रहे हैं शायद या कुछ तो एंड देन वी स्टॉप बट या आई रिमेंबर दैट So ये किसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे थे? Now तो the film has come out. You guys. बता सकती हूँ बाबा नहीं, Okay. आप खुद ही गेस कर लीजिए. So why don't we see you in more Bollywood films? You know, why not more films in Hindi? See, it's not that things come to me on a platter over here, okay? I've obviously been balancing my thing with regional films. I've been very selective in the sense that from whatever I get. Like I said, after Zid, now it's 1.5 years after which I'm coming with Great Grand Masti. So, I don't know. I mean, whatever I'll get offered, I'll obviously be doing that. ऐसा नहीं कि I'm getting, like I said, मुझे ऐसा कोई 100 offers आ नहीं रहा है. I'm pretty much new still over here. And that's the reason why I did Great Grand Masti. That would get me it'll open more avenues for me. But until then, I keep balancing it with my regional work because then that gives me the choice to not be desperate to sign something urgently. I believe we've done a Bengali version of Revolver Rani, which is done phenomenally well. Oh, sorry, Telugu. And there's also a film in Bengali, which suddenly you've said that you've got a lot of Bangladeshi fans and stuff like that. Yes. So. Come, Yeah, of course, I'm expected to. So, so tell me something. So, you know, when on that side, you know, you're so successful and everything, and then you come here, and like you said, you almost knew, Yeah. and you know, you're worried, and then and and then Indraji is also scolding you on the set and stuff like that. How does that feel? Like, I mean, any pros, any cons of that? miserable. तो नो आई मीन लाइक आई सेड कि जब मुझे फर्स्ट डे माइक पे इतना डांट रहे थे ना तो मैंने उनको बोला सर प्लीज़ आप ना साइड में डांटो मुझे सबके सामने मत डांटो बहुत अजीब लग रहा है लाइक समटाइम्स आई टू स्टार्ट डाउटिंग माई ओन सेल्फ कि इतनी फिल्मों के बाद बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट 30 फिल्म्स ओल्ड इन 5 लैंग्वेजेस बट यू नो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड it's a little lesser pressure you know because like I said अगर मैं साउथ में कुछ भी करती हूँ like मुझे जनरली वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस एंड सेक्सी रोल्स मिलते हैं रिवॉल्वर रानी बहुत बोल्ड रोल्स मिलते हैं और यहाँ पे एकदम उसका ऑपोजिट मिलता है you know so it's nice sometimes and at the same time it feels a little weird also that I still have to give an introduction to people. Maybe not after Great Grand Masti. Yeah. Well, we hope so too. So tell me something. I'd like to ask you something about Aftab. You know, he's done a phenomenal job in the film. He's like so farcical and so comical. Yeah. But is he like that, you know, off the screen also, off the set also? Or like he's like this serious guy with a, you know, serious demeanor and, you know, he's having intellectual conversations? Or
how is it? Like, you could tell us since you're playing his on-screen wife. He's very serious, yeah. Not serious meaning he's not like what he is on in the cabin. Like I just get shocked. He's like so like proper and perfect, and suddenly he's making those big faces that his teeth coming out and everything. So that used to really सरप्राइज मी, यू नो. मैंने एक बार उनको बोला भी था कि एक टैब में ना एक टैब आता था जिसमें वो टॉम करके कैरेक्टर होता है, कैट होता है, जिसके ऊपर आप ऐसे ये करो तो वो अजीब अजीब एक्सप्रेशंस बनाता है. द सेम थिंग्स ही डज, बट इन रियल लाइफ ही इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ दैट. What's your next film? When do we see you next? As of now, there's only Great Grand Masti that is releasing, and I'm just looking forward to whatever happens after that. ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि I'm reading scripts and all of that. ऐसा नहीं है. Nothing in regional languages also? Regional, yes. I just had a Bangladeshi film, Indo-Bangla film release, which became a super hit. Telugu, I have a release called Luja, which was a hit in Kannada. It was a bilingual. Today, I have another release actually in Telugu. Which was a Malayalam film, which is now coming in Telugu. So you're a Salman Khan fan, self-accepted fact. And yeah, now I'm a Tiger Shroff fan. okay, so you're a Tiger Shroff and Salman Khan. Salman Khan is, you know, also ultimately the inspiration for all of them. In fact, you have a book which is Being Salman. Oh my God, you are too observant. So tell us, like, Salman Khan, you know, how did the whole thing about, oh, I'm a Salman fan ये ऐसा start? कुछ नहीं है यार. Oh, I'm a Salman So fan. you're a Salman fan. You have a book and then you've accepted it practically everywhere. So I think what the There are other books also, yeah. But Being Salman is still the biggest and the brightest and the, well, let's say black Biggest and book goldenest. over there. So yeah, so tell us, like, Salman What? Khan, how did, okay, which is the film that you actually became a fan from? Many. Okay, See, more than that, I just somehow like that fact that he's not diplomatic and he's just straightforward. That is the thing that I like. More than his films also, I like that about him, that वो जो दिल में आता है वो बोलते हैं, and I really like that a lot. Let me ask you a tricky question then. Sultan or Great Grand Masti? Now you said you'll answer. दोनों ना बहुत, मैं ना डिप्लोमेटिक आंसर दूंगी. वो अलग जॉनर की फिल्म है, ये अलग टाइप की फिल्म है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है. Have you watched Sultan? Yes, I have. Your take on the film? I think it was nice. It was really, really nice. I think it is on the lines of like a Bajrangi Bhaijaan, you know, where he's done, like you can really see Salman Khan has worked very, very hard on that role. Like you can see that coming through. And hence And I proven. loved Anushka Sharma also in it. And hence proven you're an ardent Salman Khan fan. Okay, just a last question. Everybody liked Sultan. So I'm sure you did Yeah, as well. no, I did as well. So just a last question. You know, when we were just here, you have 4 dogs. One, they're called 1, 2, July, and August. I am quite curious. How did you come about naming them 1, 2, and July and August? If you could just tell us that. अरे कुछ नहीं, मुझे लगा 1 और 2 ऐसा नाम दुनिया में कोई नहीं रखेगा अपने डॉग्स का. इसलिए I kept that name. I just don't want anybody to have the same name as my dogs. That is why. Okay, I thought maybe it's again Salman inspired because he had dogs which will call my son, my Jan, and stuff like that. Listen, I am not this crazy a fan. Okay, right now I'm a crazy fan of Tiger Shroff, like I said. Okay, Tiger Shroff will do another segment It's with okay, you. yeah. But thank you so much for talking to us. We wish you all the luck. Thank you. Hi, this is Shraddha Das. You're watching me on BollywoodBubble.com.